Hey guys, good morning. This is Prithvi and you're watching Prithvi Nivasi. तो guys, welcome to my new vlog. सामने आपको दिख रहा है. Today I'm going to show you a brand new property on Hennur main road, very close to Hennur main road, and this is the brand new building right in front of you. मैं आपको इसका complete home tour मैं आज करवाने वाला हूँ. तो stay in the video till the end. Don't forget to like, share and subscribe माई चैनल. तो गाइस सामने आपको दिख रहा है, काफ़ी लोग मुझे रेंटल इनकम ब्रांड न्यू के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि वाई डोंट आई टेक दिस प्रॉपर्टी अप टुडे. दिस इज़ इन द फ्रंट, यू कैन सी इट इज़ 30 feet and the depth I will explain you soon. So stay in the video till the end for every important information from this video. So guys, this brand new property is अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ. तो काफ़ी सारा काम चल रहा है इसमें अभी फ़िलहाल. दिस इज़ ऑलमोस्ट 80%, 75 to 80% डन प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम प्रॉपर्टी ऑन हेनूर मेन रोड. तो हो सकता है इसका पार्ट 2, पार्ट 3 भी आए, क्योंकि अभी फ़िलहाल द कंडीशन दिस प्रॉपर्टी इज़ right now is in is that I hope I'll be able to make only the first part. And as you can see, ओनर ने काफ़ी सारा ग्रेनाइट का काम किया है. लॉट्स ऑफ क्वालिटी वर्क वी कैन एनालाइज एट दिस मोमेंट, एट दिस स्टेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. पिलर्स में भी ग्रेनाइट का काम किया हुआ है. हियर यू गो, यू कैन सी अ लॉट ऑफ वर्क कैन बी सीन राइट नाउ. Paint texture in the ceiling as well is been taken care in detail. So this is what I wanted to show, the under construction property जिसमें काफ़ी सारा मटेरियल बिखरा पड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल. That's one car parking right in front. That's how we entered the property. This is the area where we can park another 2 car parks. So कुल मिला के 2 से 3 cars आ सकते हैं with some bikes as well. And this is a ground floor property, a 2 BHK, and that's a setback you can see around the property. So 2 BHK in the ground floor with 2 to 3 car parking. And let me show you how this is the paint texture on the ceiling, and the elevation का भी काफ़ी ध्यान दिया है ओनर ने. So let me show you the elevation, how it looks. This is how the outer elevation is going to look near the gate. काफ़ी सारा ध्यान दिया है in terms of the outcome of the property, the outer elevation, the front elevation का काफ़ी ध्यान ओनर ने दिया है. And the woodwork is massive in this property. तो जब हम अंदर जाएंगे प्रॉपर्टी के, in the first floor, I'm going to show you the first floor, which is completely fully loaded woodwork done in that property. So stay in the video and let's see what's there in the first floor, how many bedrooms and कितना सारा woodwork and fall ceiling में क्या क्या है, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ. And price, definitely if you stay in the video, only the price is mentioned in this video itself. So I request kindly do not ask the price on WhatsApp chat और call करके price मत पूछिएगा, क्योंकि price आपको इस वीडियो में ही मिलेगा.
तो गाइज जैसे कि मैंने कहा, दिस इज़ फुली लोडेड वुडवर्क डन, द कंप्लीट इंटीरियर्स. इतना सारा वुड तो मैंने बहुत कम प्रॉपर्टीज़ में देखा. यहाँ पे हर जगह में आपको दिख रहा है आगे फॉल सीलिंग्स एंड सो मच वुडवर्क. मैंने कहीं इतना वुडवर्क तो कहीं देखा नहीं इन रेंटल इनकम. सो दिस ओनर इज़ ट्राई टू गेट वुडवर्क एवरी कॉर्नर ऑफ दिस हाउस. सो देखते हैं कितने बेडरूम्स हैं इसमें. This is the living area right in front. That is the dining area. And देखते हैं आगे जाके. So look at this fall ceiling. हर जगह से वायर्स बाहर आ रहे हैं from the fall ceiling. जब ये बन जाएगा तो शायद when this property is going to be completed, I hope हर जगह से लाइट होंगी इसमें. And this is the wall unit, the TV unit. Beautiful it looks. Once the property is completed, I hope owner does not increase the price. I'm going to explain you at this moment. Look at this superb property. Everywhere there is wood everywhere. Lovely interiors. Looks like the property is going to have a beautiful outcome when it's going to be ready. So that's how we entered, and that goes to the dining area and वहाँ से किचन. तो किचन में आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद. तो दिस इज बेसिकली द सिटिंग एरिया इन द लिविंग एरिया राइट नाउ. एंड once this is the common toilet right in front on the left side, and the theme is beautiful, and guests are going to like this when they enter into this common toilet. So we are entering into the first bedroom right now, and lots of woodwork here as well, and fall ceiling का भी ध्यान दिया हुआ है यहाँ पे. So guys, this was attached toilet, lovely looking theme there, and we are entering into the living room, a large beautiful living room right in front of you. And आगे जाकर right behind the wall unit on the left and right there are two bedrooms over here. तो right side में check करते हैं the bedroom with complete woodwork, and this has a balcony as well. So basically this property comes with 5 units in this complete building, which is वो सारी units मैं आपको बाहर से समझाऊंगा. So expected rent जो अगल बगल में इस एरिया में already people are fetching this kind of rent. If you rent this out, you can easily get about 85,000 rupees rent for the whole building. तो वो मैं आपको बाहर से समझाने वाला हूँ. और ये दिस इज़ द किचन राइट इन फ्रंट ऑफ यू. तो द प्लॉट साइज would be about 30 by 45, which would be about approximately 1350 square feet.
This is a B khata and the property comes under BBMP limits. And the plot direction, the facing of the plot is west facing and the doors are all according to Vastu, which is east facing doors. वेरी रिसेंटली मतलब हाल ही में मैंने एक बिल्डिंग यहाँ पे बेचा था, रेंटल इनकम बिल्डिंग, जिसमें ओनर अभी फ़िलहाल रेंट पा रही हैं अबाउट 25,000 रुपीज़ रेंट उनको मिल रहा है फ्रॉम द टेनेंट. तो इस बिल्डिंग के हिसाब से रेंटल इनकम हो सकता है आपको 2-3 हज़ार ज़्यादा भी मिले 3 बेडरूम का. तो मैं आपको वो समझाऊंगा बाहर से. तो ओनर ने इस बिल्डिंग का प्राइस रखा हुआ है 2 करोड़ 25 लाख, दैट इज़ 2 करोड़ 25 लैक्स. काफ़ी सारी बड़ी लैंडमार्क्स हैं इसके आसपास, जैसे कि मान्यता टेक पार्क है, हेनूर मेन रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अब कन्वर्ट हो चुका है हेनूर रोड, वो भी बहुत पास में है. एंड दिस इज़ ऑन के नारायणपुरा क्रॉस राइट नाउ. एंड हेनूर काफ़ी पास में है, तनीसंद्रा काफ़ी पास में है, एंड Kristu Jayanti College is also very close by. So lots of things happening around this property. And lastly, not to forget, there is a personal borewell with CMC water in the layout. So now coming to the rent part, the ground floor is having a 2 BHK which would fetch about 15,000 rupees rent. The first floor जो आपको दिख रहा है सामने, that would give you a 3 BHK 27,000. Even if you keep 25, so there is 3 BHK in the first floor which would give 25,000. Second floor में 3 BHK which would fetch about 25,000. And in the last floor, third floor, there are 2 units of 1 BHK which would fetch 9,000 rupees each. So all put together approximately 85,000 rupees rent yield is coming out of this brand new rental income property for sale in Bangalore. So guys, don't forget to like, share and subscribe, and kindly call me. My number is in the description. My WhatsApp link is given in the description. और अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी कॉस्टली है, then watch this video and suit your budget.